Hello everyone, welcome back to the channel Concepts of Commerce, your virtual learning platform जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड सभी टॉपिक्स, बी इट फ्रॉम इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, financial management, management accounting, and many more. My name is Deepshika Gandhi, and the topic that we are taking for today's video is a continued topic that we have been taking from last two videos. पहले हमने डिस्कस किया था inflation, meaning and types of inflation. In the second video, we discussed about causes of inflation, and today we are going to discuss effects of inflation. So inflation किसी भी इकोनॉमी को पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ वेज में इम्पैक्ट करता है. And some sections of society gain from inflation, whereas other sections of society lose from inflation. So first of all, we are going to discuss the negative impacts of the inflation. Thereafter, we will discuss the positive impacts that inflation might have on the economy. उसके बाद we will have a look at the people who gain and who lose during inflation. So before that, if you have not subscribed to the channel, I would request all of you to please subscribe to the channel, because now I am going to start posting multiple choice questions on the channel also, which will be very useful for all of you for your revisions. And any such post on the channel is only visible to the subscribers. So please do subscribe to the channel. Now let's begin with the video. First of all, let's have a look at the negative impacts of inflation in the economy. Reduces purchasing power, or if you are writing in the exam, you can better write it as erodes purchasing power. So what does that mean? We have discussed in the previous videos also, जब भी inflation आता है, so currency की purchasing power कम हो जाती है. What does that mean? कि अगर आप एक सेट कॉम्बिनेशन लेते हैं गुड्स का, a given basket of goods, if we suppose, now you have to pay more money to buy the same basket of goods जो आप पहले कम पैसों में खरीद पा रहे थे. Let's suppose 1 kg apples, 1 kg banana, 1 kg rice, some items of stationery, 1 bottle of shampoo. Earlier you were purchasing for 1000 rupees. So now you will be paying more than 1000 rupees for the same basket of goods जो आप पहले 1000 रुपए में खरीद पा रहे थे. That is what we know by inflation. That means अभी आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो गई है. अभी सेम गुड्स परचेज करने के लिए आपको पहले से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे. That is what we understand by inflation. So inflation क्या करता है? आपकी परचेजिंग पावर को कम कर देता है. And all this is very evident. This we witness in our day-to-day life also. पहले जितने में आप 1 लीटर पेट्रोल परचेज करते थे, अभी पैसे आप ज्यादा पे करते हैं, लेकिन पेट्रोल उससे कम आता है. That is what we understand by inflation. Secondly, it increases the gap between rich and poor. So इंडिया में एक ही बहुत बड़ी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, that there is a wide gap between rich and poor. बट जब भी इन्फ्लेशन आता है, ये गैप और ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस सभी क्लासेस के लिए इक्वली बढ़ते हैं. बट क्या सभी क्लासेस की इनकम इक्वली बढ़ती है? अगर हम कंपेयर करते हैं somebody from a below poverty line, second is some middle class family, and the third one is a very rich businessman. So जब भी इन्फ्लेशन आएगा, प्राइसेस तीनों क्लासेस के लिए इक्वली बढ़ेंगे, सभी गुड्स एंड सर्विसेज के. बट क्या तीनों क्लासेस की इनकम भी बराबर बढ़ेंगी? नहीं. So that is why inflation increases the gap between rich and poor, and it is very harmful for the economy. एक और चीज जो यहाँ पर समझनी बहुत जरूरी है कि क्या पुअर की स्पेंडिंग पावर कम होना, क्या पुअर का और पुअर हो जाना सिर्फ उस इंडिविजुअल के लिए खराब है या फिर वो पूरी इकोनॉमी के लिए खराब है? It is very harmful for rich people also. It is very harmful for the whole economy also, because these poor people or these middle income people are giving demand to the rich classes, top businessmen also. क्या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन बिना कंज्यूमर के, बिना लेवल इनकम या बिना लो इनकम ग्रुप्स के सस्टेन कर सकता है, प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है? नो. A rich person cannot be rich just by purchasing his or her own products. The business needs to have demand in the economy, और demand उसे कौन देता है? The entire economy. So अगर poor की spending power कम होती है, that is not only bad for the individual or that class of people, it is very harmful for the rich class also, and it is also very harmful and detrimental for the growth of the entire economy. So now how inflation impacts
इन्वेस्टर्स इन अ नेगेटिव मैनर। इन्वेस्टर्स पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है बाय इन्फ्लेशन? ऑल नो, इन्फ्लेशन में इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं, या फिर इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को हाई कर देता है। सो देन व्हाट विल हैपन? It will be very expensive for the investors to take loan from the banks and invest in certain businesses. Also, due to rise in instability in the economy and rising risk in the economy, it demotivates investors to invest in the economy. So अगर market में inflation है, it will have a negative impact on the investors in the economy. Also, they will be scared of investing in the economy and investment will decline. होल्डिंग। अब जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन होता है, पीपल हैव अ फियर कि आगे आने वाले टाइम में प्राइसेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। सो उससे क्या होता है? पीपल स्टार्ट होल्डिंग गुड्स विद देमसेल्व्स। वो सामान को इकट्ठा करके रखना शुरू कर लेते हैं कि आगे आने वाले टाइम में प्राइसेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। सो उससे क्या होता है? अगेन शॉर्टेज हो जाता है मार्केट में गुड्स का, एंड अगेन इट क्रिएट्स आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ गुड्स इन दी मार्केट, leading to even more rise in prices in the near future. So inflation also reduces economic growth of the country. Why does that happen? Because हमने अभी डिस्कस किया कि जब इन्फ्लेशन होता है, मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, because the purchasing power of people decline. इन्वेस्टर्स नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं, सेविंग्स कम हो जाती हैं, अनसर्टेनिटी एंड इंस्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है इकोनॉमी में। सो ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्लाइन करने लगता है लोगों का, बिकॉज बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू सस्टेन इनिशियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिकॉज देयर परचेजिंग पावर इज लेस नाउ। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज राइज बिकॉज रिच ज्यादा रिच हो जाते हैं एंड पुअर ज्यादा पुअर हो जाते हैं। So inflation altogether causes a state of uncertainty or instability in the economy. Why is that so? First of all, it impacts the general price level. Prices बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. People lose their confidence in the market, so they refrain from investing in the market. Also, interest rates are higher, so that is one more reason why people are not investing in the market. Business cycles start fluctuating. Economic inequalities rise. Balance of payments also gets impacted. People start hoarding goods. All of these contribute to uncertainty and a state of instability in the economy. Fall in value of savings. That means there is a decline of savings in the economy, because as we all know inflation में prices बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. So it is very difficult for the people to sustain their standard of living, और उनका जो major part होता है income का, that goes away in maintaining their standard of living and purchasing things that they need. That is why it becomes difficult for the people to save money for the future. उनकी करंट इनकम से अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपना करंट स्टैंडर्ड मेंटेन करना ही एक चैलेंज हो जाता है, बिकॉज उनका इनकम उतना नहीं बढ़ता है जितने प्राइसेस बढ़ जाते हैं. दैट इज वाई देयर इज अ डिक्लाइन इन द सेविंग्स ऑफ पीपल. Reduced exports. Now, if we have inflation in the economy, so that means our goods will be expensive in the international market also. So people from other countries will refrain from purchasing goods from our country, and that is why it will reduce exports for the country. And reducing exports for the country will impact the balance of payments also in a negative manner. Increase in imports. Because goods are expensive in the domestic market, some people might find it cheaper to import the goods from other countries, and hence what will happen, instead of buying from the domestic market, instead of buying from India, people will start importing from other countries where they might find the goods cheaper, and that is why the import of the country will rise. That will also impact the balance of payments in a negative manner. Apart from these, we can have certain positive impacts of inflation in the economy also. Let's have a look at them.
Now let's have a look at the different classes of people जिनमें से कुछ gain करते हैं during inflation and some of them lose during inflation. That was all for today. I hope you liked today's video. Please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video. Till then, keep learning, keep sharing. Have a nice day.